हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स का ESE प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस काफ़ी अच्छा गया होगा। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे। मैं यहाँ आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 75 से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल 11 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड्स के पूछे गए थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस आप इजिली सॉल्व कर सकते थे और 11 क्वेश्चंस में आप 10 क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस बेस्ड था, SI एंड CI वाला। तो हम सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे हम डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे और अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप चैट सेक्शंस में बता सकते हो। आई विल रिपीट दैट क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 75 ये आपको दिया गया है कि चिल्ड्रंस आर इन अ परस्यूट ऑफ अ डॉग हुज लेस हैज ब्रोकन। यानी कि कभी क्या होता है कि कुत्ते का जिससे बांधा गया था तो उसका रस्सी टूट गया है, तो उसके पीछे चिल्ड्रंस भागना स्टार्ट कर दिए। जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। सपोज डेट कि आपका ये डॉग है, ये माय डियर स्टूडेंट्स ये आपको डॉग दिया है, इसके पीछे आपको जेम्स हैं, ठीक है, डॉग के पीछे जेम्स है। आफ्टर डेट यू कैन सी डेट हेयर रूबी इज बिहाइंड जेम्स, रूबी जेम्स के पीछे है, हेयर इज रूबी। नेक्स्ट, मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द अपोजिट डायरेक्शंस। मैक्स डॉग के आगे है लेकिन डॉग जिस डायरेक्शंस में भाग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शंस में वो चल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैक्स हो गए। मैक्स का डायरेक्शंस ये है और आपको जो ये डॉग्स हैं, जेम्स हैं, रूबी हैं, ये इस डायरेक्शंस में रन कर रहे हैं। उसके बाद आपको गिवन है As the children and the dog passes, Max turns around and join the pursuits. ऐसा हुआ कि जैसे चिल्ड्रन और डॉग आगे चले गए तो मैक्स भी उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। He runs in behind Ruby. James runs faster and is alongside the dog on the left. He runs in behind the Ruby. तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको डॉग यहाँ पे हो गए, ये सपोज करो आपके पास डॉग है और ये दिया गया है कि ही रन्स इन बिहाइंड रूबी, रूबी के वो पीछे है मैक्स। तो आप सपोज करो कि यहाँ पे आपको रूबी है तो रूबी के बिहाइंड आपको मैक्स है, मैक्स भी रन करने लगा, ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन है, रन्स फास्टर एंड अलोंगसाइड द डॉग ऑन द लेफ्ट। जेम्स रन्स फास्टर एंड अलोंगसाइड द डॉग ऑन द लेफ्ट। तो डॉग का आप लेफ्ट राइट डिसाइड कर लें कि डॉग का लेफ्ट राइट क्या होगा। तो अगर हम LR कंसेप्ट को यूज करें, लेफ्ट राइट कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं तो ये आपका लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो आपके पास गिवन है कि ही रन्स इन बिहाइंड, जेम्स रन्स फास्टर एंड इज अलोंगसाइड द डॉग ऑन द लेफ्ट। तो ये आपको जेम्स हो गया बच्चों, ये आपको जेम्स हो गया लेफ्ट साइड में डॉग्स के। आफ्टर दैट रूबी रन्स फास्टर एंड इज अलोंगसाइड द डॉग ऑन द राइट, और डॉग के राइट में आपको रूबी गिवन है कि ये ऐसा कंडीशंस हो जाता है, ठीक है। विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, डॉग के जस्ट पीछे कौन है। तो मैक्स रूबी के पीछे था, रूबी अगर फास्ट चली है तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉग के पीछे जस्ट जो पीछे हो गए वो मैक्स होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो डॉग के जस्ट पीछे आपको मैक्स होगा। और एक और चाइल्ड का यहाँ पे दिया गया है नेम रैचल। रैचल माय डियर स्टूडेंट्स ये आपको रूबी के बिहाइंड थे, तो रैचल इज हेयर और यहाँ भी आपको रैचल जो है इसके बिहाइंड होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज मैक्स। आपसे ये पूछा गया था कि इसके करेक्ट आंसर डॉग के जस्ट बिहाइंड कौन है, तो डॉग के जस्ट बिहाइंड मैक्स थे। तो काफी आसान क्वेश्चंस था और आप LR कंसेप्ट से इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 भी काफी आसान है, ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस भी आपको लेफ्ट राइट कंसेप्ट्स पे, LR कंसेप्ट्स पे बेस्ड थे। पहले आप क्वेश्चंस को देखें कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है आपसे। एट द बेसबॉल गेम हेनरी वाज सिटिंग इन सीट नंबर 253। हेनरी का जो सीट है वो सीट नंबर आपको 253 दिया हुआ है। तो आप ये मान लो कि ये आपके पास हेनरी है। सपोज हेयर इज हेनरी,
हेनरी के सीट्स नंबर आपको 253 गिवन है, हेनरी सीट्स नंबर इज 253। मार्ला वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ हेनरी, हेनरी के राइट में मार्ला सीट की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप LR कंसेप्ट लगाते हैं तो हेयर इज लेफ्ट एंड राइट, एंड मार्ला जो है आपके हेनरी के राइट में गिवन है 254 सीट्स पे। तो 254 सीट्स जो है वहां पे आपको मार्ला है, तो M ये आपको मार्ला हो गई। नेक्स्ट है इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी वाज जॉर्ज, लेफ्ट में आपको जॉर्ज है, तो यहाँ पे आपको जॉर्ज हो गया। इसके सीट्स नंबर हो जाएंगे 252, जस्ट लेफ्ट में है। तो इंज वाज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज, तो अगर हम जॉर्ज का लेफ्ट राइट देखते हैं तो जॉर्ज का लेफ्ट राइट आपको ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो इंज जो है वो आपको लेफ्ट में है जॉर्ज के, तो हेयर इट विल बी 251 एंड इंज विल बी सिटिंग हेयर। ओके, एंड विच सीट इज इंज सिटिंग इन, आपसे पूछा गया था कि इंज का सीटिंग नंबर क्या है। तो इससे आसान क्वेश्चंस और क्या हो सकते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर्स ऑप्शन नंबर ए होंगे। काफी आसान क्वेश्चंस था और आप सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। ये क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसमें आपको SI CI और पहले आपको प्रिंसिपल फाइंड करना था कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, टाइम ऑफ ड्यूरेशंस दिया गया है और डिफरेंस दिए गए हैं कि SI CI का आफ्टर 2 ईयर्स क्या डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस इज ₹16 एंड इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज आस्क्ड दैट इफ द इंटरेस्ट वेयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड होते हैं तो डिफरेंस क्या होंगे इंटरेस्ट में, नियरली आपको पूछा गया कि क्या आपको डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों हमारा जो पहला मोटिव होगा वो होगा प्रिंसिपल फाइंड करना कि प्रिंसिपल क्या है इस क्वेश्चन में। तो हम ये देख रहे हैं कि टाइम आपके पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन दैट टाइम इज 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम आपके पास 2 ईयर्स गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, R इज 8% एनुअली, इट इज 8% एनुअली माय डियर स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चंस में ये गिवन है, पहले एनुअली था, तो एनुअली अगर आपको ये गिवन है एनुअली आप लिख लो, एनुअली आपका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। CI माइनस SI, CI माइनस SI आफ्टर 2 ईयर इट इज ₹16, ₹16 इज द CI माइनस SI मीन्स इट इज द डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट अब हमारा जो पहला मोटिव होगा ये होगा कि प्रिंसिपल फाइंड करना। तो अगर हम CI का फॉर्मूला लिखें तो CI का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n एंड माइनस ऑफ P, इट विल बी द CI and the SI will be, SI is equals to P into R into T by 100, P into R into T by 100। My dear students, अगर आप सारे वैल्यूज पुट करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ P into 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n माइनस ऑफ 1, ये आपका आ गया CI और SI आ गया। तो दोनों के जो डिफरेंस दिए गए हैं SI एंड CI का जो आपको डिफरेंस गिवन है, SI and CI difference is given at ₹16. We can say that CI minus of SI is equals to ₹16। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज था आपके पास P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 एंड P इंटू R इंटू T divided by 100 is equal to ₹16। Okay my dear students, so our main motive is to find the P because everything is given in the questions, rate of interest is given and time of durations is also given, so we will calculate the what will be the principal. If we take out the P as common then it will come out as 1 plus rate of interest was given as, rate of interest was my dear students 8%, we can put here 8 by 100 to the power 2 minus of 1, okay, minus of 8 into 2 divided by 100. You will have to calculate the principal value. That's why this question is little bit calculative. If we calculate the P, then it will come out as ₹2500. If you calculate the P, then it will come out as ₹2500. Next, it is asked that after 2 years, what will be the difference between the SI and the CI if it is compounded half yearly. If it is asked half yearly, then the time of the durations will get doubled and the rate of interest will get halved in CI.
बट इट विल नॉट अफेक्ट द एसआई। एसआई को कोई अंतर नहीं होगा। एसआई जो हमारा पहले था 2 साल के लिए, एसआई अभी भी वही होगा। सीआई में चेंजेज हो जाएगा। सीआई के जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आधा हो जाता है और टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो होता है वो डबल हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पी पता चल गया। तो अगर हम सीआई कैलकुलेट करते हैं तो सीआई आपके पास होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 2n, क्योंकि हाफ ईयरली दिया गया है तो आर बाई 2 आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दोगे और टाइम को 2n कर देंगे, माइनस ऑफ पी के जगह अगर हमने पी को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बच्चों हम डायरेक्ट सिंपली लिख सकते हैं -1 इफ वी हैव टेकन पी आउट एज कॉमन। ओके, अब आप पुटिंग द वैल्यू एंड कैलकुलेट द सीआई। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये 2500 हो गया। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दिए गए थे 8%, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास ये 4 हो जाएगा। तो 4/100, टाइम आपका 2 ईयर्स था तो ये 4 हो गया -1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि सीआई कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप सीआई कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यूज आपके पास आ रहा होगा। सीआई का वैल्यूज आपके पास आ रहा है 424.64। सिंपली आप एसआई कैलकुलेट कर सकते हैं। एसआई तो काफ़ी आसान है। एसआई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, ये सारे वही रह जाएंगे। तो पी इज 2500। नेक्स्ट वी कैन पुट एज रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 8% एंड टाइम इज 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय माय डियर स्टूडेंट्स 100। तो ये आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास ₹400 आ जाएंगे। इसके तो कैलकुलेशंस काफ़ी आसान थे। मेजर जो पार्ट है कैलकुलेशंस का वो आपको प्रिंसिपल्स फाइंड करने में। अगर आप एक बार प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हो तो उसके बाद सीआई एसआई हाफ ईयरली में सिंपली आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे डिफरेंस पूछा गया है सीआई एंड माइनस ऑफ एसआई। सीआई माइनस एसआई का अगर हम डिफरेंस देखें तो एक आ रहा है आपके पास 424.64 माइनस ऑफ 400। तो ये आपके पास डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ₹24.64, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपको दिया गया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास ये गिवन था 24.64, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ कि सिंगल ये क्वेश्चंस ऐसा है जो जिसमें कि कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा था। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस काफ़ी आसान हैं और उसमें कैलकुलेशंस भी नहीं है। जैसे इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस देखा था 75, 76, दोनों क्वेश्चंस आपका एक तो सिटिंग अरेंजमेंट था और दोनों में लेफ्ट राइट कंसेप्ट यूज हो रहा था जिसे हम लोग LR कंसेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 काफ़ी आसान है लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। जैसे ही इस टाइप के वो क्वेश्चंस देखते हैं उन्हें लगता है कि ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस का क्वेश्चंस है और वो काफ़ी घबरा जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल हो जाता है जैसे ही वो प्रोबेबिलिटी या पीएनसी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो। और सबसे बड़ी बात जो है वो है क्वेश्चंस को समझना। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को देख रहे हो तो क्वेश्चंस में ये गिवन है कि ए लाइब्रेरी हैज़ 2 बुक्स, किसी लाइब्रेरी में 2 बुक्स हैं, ईच हैविंग 3 कॉपीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 2 बुक, आप मान लो कि आपके पास 2 बुक है, ठीक है, ये आपके पास 2 बुक हो गए और दोनों बुक के जो कॉपी हैं, दोनों बुक के कॉपी हैं आपके पास 3 कॉपी ईच हैविंग 3 कॉपीज। तो दोनों बुक के 3-3 कॉपीज हैं तो 3 कॉपी ईच। ओके, नेक्स्ट बच्चों आप ये देखें, नेक्स्ट आपके पास दिया गया है एंड 3 अदर बुक्स ईच हैविंग 2 कॉपीज। 3 और भी तरह के बुक्स हैं जिसके कि 2 कॉपीज दिए गए हैं। तो 3 अदर बुक्स, तो 3 बुक्स हो गए और उसके जो कॉपी हैं 2 कॉपी ईच है, 2 कॉपी ईच। माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास गिवन है। अब ऐसा है कि इसे अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल दीज बुक्स बी अरेंज्ड इन अ सेल्फ सो दैट कॉपीज ऑफ द सेम बुक आर नॉट सेपरेटेड। जो एक तरह के बुक हैं वह एक ही जगह सेल्फ पे होगा। तो सपोज करो कि आपके पास जो टोटल डिफरेंट टाइप्स के बुक हो गए, टोटल डिफरेंट टाइप्स के बुक आपके पास 5 हैं, 2 बुक्स इस तरह के हैं और 3 बुक्स ऐसे हैं। तो टोटल जो टाइप्स ऑफ बुक हम कह सकते हैं, टोटल टाइप्स ऑफ बुक, माय डियर स्टूडेंट्स टोटल टाइप्स ऑफ बुक हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। अगर आपके पास टोटल टाइप्स ऑफ बुक जो है 5 हैं तो हम ये कह सकते थे कि जैसे सपोज करो कि किसी एक टाइप का बुक है, सपोज कीजिए ये आपके पास बुक गिवन है, अगर 2 बुक है और 3 कॉपी है तो इसी बुक के 3 कॉपी हैं तो ये तीनों के तीनों एक साथ होने चाहिए। जहां भी ये जाएंगे एक साथ उसे हम अरेंज करेंगे।
इस 3 बुक को खुद में अरेंजमेंट का एक ही तरीका होता है, क्योंकि सिमिलर है तो सिमिलर चीज़ों को अरेंज करने का सिंगल है कि 1 वेज होंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो सिंपली आप कह सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस में कि जब सेम टाइप्स के बुक को आपको एक जगह रखना था तो टोटल आपके पास 5 डिफरेंट टाइप्स के बुक हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 डिफरेंट टाइप्स के बुक हैं तो उसे हम लोग 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका आ जाता 5 फैक्टोरियल डेट इज 120। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है लेकिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। एक्चुअली जब एग्जामिनेशन हॉल में आप रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स रहता है और उसके कारण आप क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का था और काफ़ी आसान क्वेश्चंस था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ये क्वेश्चंस भी आपका बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 79 ये हमारे डायरेक्ट क्लास नोट से हैं जो मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड करता हूँ हर लेक्चर्स के बाद, उसी में से ये क्वेश्चंस आया है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको क्लासेस में भी करवाया है। तो आप देख सकते हैं 21 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज, 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट ईच रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ वन वेराइटी ओनली। ऐसा कहा गया है कि जैसे 21 मैंगो ट्री है, 42 एप्पल ट्री है और 56 ऑरेंज ट्री है, इसको आपको रो में अरेंज करना है और इस तरह से अरेंज करना है कि एक रो में एक ही तरह के प्लांट होने चाहिए, एक ही तरह के ट्री होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंगो ट्री और एप्पल ट्री आपको साथ में क्लब कर देना है, ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों आपसे ये पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द एबव ट्रीज में बी प्लांट। जो हम अगर प्लांट कर रहे हैं तो एक कितने मिनिमम रोज होने चाहिए, कितने मिनिमम रोज होने चाहिए, और सारे रो में आपको इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं, जैसे ही आप देखते हो तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको HCF फाइंड करना है। तो अगर हम 20 टोटल आप ट्रीज देखो तो ये 21 मैंगो ट्री आपके पास गिवन है, 21 आपको मैंगो ट्री है, 21 माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास मैंगो ट्री हो गए। 42 आपके पास एप्पल ट्री है, 42 इज एप्पल ट्री। ओके, नेक्स्ट 56 ऑरेंज ट्री, 56 आपके पास ऑरेंज ट्री गिवन है, 56 ऑरेंज ट्री है। ओके, अब आपको इसको रो में प्लान करना है और इस तरह से प्लान करना है कि सारे रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज रहें। ठीक है, तो आप इसमें HCF पहले पता करोगे 21, 42 एंड 56 का। अगर हम HCF पता करते हैं, HCF ऑफ 21, 42 एंड 56, HCF आप लोग फाइंड करना जानते होंगे, ये 7, 8 की चीजें हैं। तो बच्चों अगर आप इसका HCF पता करेंगे तो ये 7 आ रहा होगा। HCF आप प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से पता कर सकते हो, ये सब चीजें आपको हमने नंबर सिस्टम में भी बताया है। तो टोटल आपके पास HCF आ गए 7। तो मैंगो ट्रीज के जो रो होंगे वो कितने होंगे, तो वो आपके पास होंगे 21 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है। नेक्स्ट एप्पल ट्री के टोटल रो कितने होंगे, तो 42 डिवाइडेड बाय 7 एंड 56 डिवाइडेड बाय 7। तो आपसे टोटल रो पूछा गया था, तो ये 3 हो गया एंड माय डियर स्टूडेंट्स ये 6 है और ये आपके पास 8 है। अगर आप ऐड कर देते हैं इसे तो आपके पास आंसर जो होगा 17 रो आ जाएगा और वो आपका ऑप्शन नंबर डी गिवन है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम गेट एंड ESE का कंपैरिजन करें कि किसमें जनरल एप्टीट्यूड डिफिकल्ट पूछा जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो डिफिकल्ट किसी में भी नहीं है, गेट में भी नहीं पूछा जाता है और आपको ESE में भी नहीं पूछा जाता है। बट वी कैन से दैट द क्वेश्चन आस्क्ड इन द ESE एग्जामिनेशंस आर लिटिल बिट इजी एज कंपेयर टू गेट। गेट में आप देते हो तो वहाँ पे भरवल के भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। ठीक है, अगर भरवल के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो बच्चों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और वरी ज़्यादा करने लगते हैं। लेकिन ESE में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ आपका क्वांट से रहता है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस भी आपका नंबर सिस्टम से ही है। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इन सारे टॉपिक्स पे ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो इसीलिए बच्चों मैं कभी कभी बोलता भी हूँ कि आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशंस का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपको अप्रोक्सीमेशंस के भी आइडियाज़ होने चाहिए कि क्या स्क्वायर रूट होता है, क्या क्यूब रूट होता है। अगर आप इन चीज़ों को याद रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अप्रोक्स क्या वैल्यूज है, ये किसका रूट हो सकता है। ठीक है,
आपको ये पता चल जाता है कि ये किसके रूट्स हैं। जैसे बच्चों इस क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो इस क्वेश्चंस में पहले पूछा क्या गया है, पहले आप ये देखें। ए जनरल विशेस टू ड्रॉ अप हिज 36,562 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर के तरह क्या करना है कि इतने सोल्जर्स को एक लाइन में लगाना है, ठीक है, आप ये मान लें। आफ्टर अरेंजिंग देम ही फाउंड दैट सम ऑफ देम आर लेफ्ट ओवर। ऐसा हुआ कि उसने स्क्वायर में अरेंज करने का सोचा, लेकिन उसको अरेंज किया गया तो कुछ जो सोल्जर्स हैं वो बचे रह गए, कुछ जो सोल्जर्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स बचे रह गए थे। तो आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी आर लेफ्ट। तो अगर हम ये कहते हैं कि 20 का आप स्क्वायर पता करो या 200 इंटू 200, जैसे आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये किसके स्क्वायर रूट हो सकते हैं या कितना बचेगा, ये कैसे आप फाइंड कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमको पता है कि 200 का अगर आप स्क्वायर पता करते हैं, 200 का अगर आप स्क्वायर पता करते हो तो ये हमारे पास हो जाता है 40000, यानी कि हमारा जो भी आंसर्स होगा या जितने भी स्क्वायर्स में बटालियन को वो अरेंज किए होंगे तो वो 200 से कम होगा। तो आप 190 का आप चेक कर लो कि 190 के आपके पास स्क्वायर्स कितने हैं, उसके बाद आप 191 का चेक करो। तो इस तरह से अगर आप चेक करते हैं बच्चों तो आपके पास आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर आपने 190 का स्क्वायर्स 191 का स्क्वायर्स फाइंड किया होगा तो ये आपके पास 190 का आ रहा होगा 36100, ठीक है, ये आपके पास 36100 है। और 191 का माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप स्क्वायर्स पता करते हैं तो 191 का है आपके पास 36481, ठीक है, ये आपके पास 36481 है। और ये सारे कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हैं, आप एग्जाम में भी इस तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हो इजीली। तो 191 आपका उससे कम है 36562 से। अगर आप 192 का पता करोगे तो वो इस नंबर से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों जो सोल्जर्स को अरेंज किया गया था तो एक रो में 191 थे और टोटल रो आपका 191 होगा, कॉलम 191 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब जो सोल्जर्स बचे होंगे वो कितने बचे होंगे, 36562, इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा 36481, ठीक है। तो अगर आप इसे माइनस करते हैं तो ये 1 हो गया, ये आपके पास 8 आ गया और ये सारे कैंसिल्स हो गए। तो आपके पास ऑप्शंस गिवन है 81 विल बी द करेक्ट आंसर्स। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान थे, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना होता है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो बच्चों आपको अप्रॉक्स 20 तक तो स्क्वायर रूट या स्क्वायर ये सब पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आप उसे याद कर लोगे तो आपका कैलकुलेशंस का टाइम बचेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चों को कि हमेशा 20 तक आप स्क्वायर याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चंस भी आप में से सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 91। ओके, ओके 91 काफ़ी आसान क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस तो ESE स्टैंडर्ड्स के नहीं हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये 5-6 के स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चंस में ये गिवन है कि ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय 20 बकेट्स ईच ऑफ कैपेसिटी 13.5 लीटर्स। सपोज करें कि ये आपके पास टैंक है, ठीक है। टैंक का वॉल्यूम आपको नहीं गिवन है, लेकिन आप इनडायरेक्टली देखो तो वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। बच्चों आपके पास बकेट है और एक हमने बकेट बना लिया है। एक बच्चों यहाँ पे हम बकेट को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास बकेट है, स्मॉल बकेट, तो इसके टोटल जो नंबर है तो 20 बकेट्स हैं, ठीक है। बकेट्स जो है बच्चों वह आपका 20 है और एक बकेट का कैपेसिटी 13.5 लीटर्स है। एक बकेट का कैपेसिटी 13.5 लीटर है। इज दिस क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टोटल 20 बकेट्स हैं और इस टैंक को फिल करने में टोटल 20 बकेट्स लगते हैं। तो हम अगर यहाँ कैलकुलेट करें वॉल्यूम तो वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बकेट्स इज 20 एंड इफ वी मल्टीप्लाई इट विथ 13.5। अगर बच्चों इसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लीकेशंस भी काफ़ी आसान है। 13.5 इंटू 2 आपके पास आ रहा होगा क्योंकि ये डेसिमल आपके पास कैंसिल हो जाएगा। या अगर आप कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, लास्ट में आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो 270 आपका क्यूबिक यूनिट्स होगा, जो भी यूनिट्स आपके पास गिवन होगा तो हम ये लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। आपका वॉल्यूम है तो ये आपका क्यूबिक यूनिट्स में रहता है।
नेक्स्ट आपको गिवन है इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट्स बी 9 लीटर। अगर सपोज कीजिए कि बकेट के जो कैपेसिटी होते वो 9 लीटर होते, सपोज करें माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक दूसरा बकेट ले लिया, इस तरह का बकेट लिया है और इसके कैपेसिटी जो है वो 9 लीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि इसे, इस टैंक को फिल करने के लिए कितने बकेट की जरूरत होगी, कितने बकेट की नीड होगी, ये आपको क्वेश्चंस में पूछा गया। हाउ मेनी बकेट्स विल फिल द सेम टैंक। जब सेम टैंक की बात होगी तो वॉल्यूम यहाँ पे पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम हमने फाइंड किया है, ये 270 वॉल्यूम हमने फाइंड किया है। तो बच्चों आपको हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी है 9 और आप बकेट का नंबर मान लो x इज इक्वल्स टू आपके पास ये हो जाएगा 270। तो x का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 270 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास 30 बकेट्स आ जाएंगे और इसके ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 91 है, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ये आपका ज्योमेट्री टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके पास ये ज्योमेट्री टॉपिक से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 92, और काफी आसान क्वेश्चन था। आपके पास गिवन है वन साइड ऑफ अ रोहम्बस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक साइड जो है रोहम्बस के वो आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ रोहम्बस। एक हम रोहम्बस को ड्रॉ करते हैं बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कि रोहम्बस का एरिया क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि ये रोहम्बस है और रोहम्बस के प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए आपको कि रोहम्बस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो अगर ये हमारा रोहम्बस है ए बी एंड सी एंड डी, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये गिवन है कि रोहम्बस है और इसके दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल एसी हो गया और एक डायगोनल हमारा बीडी हो गया। अगर आपको रोहम्बस का प्रॉपर्टी ध्यान होगा कि रोहम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री पे होगा और साथ ही साथ बाइसेक्ट तो करते ही हैं। तो ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा और ये आपको इसके इक्वल हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट साइड्स दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो सारे साइड्स जो होंगे वो आपके 10 हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का आपका 10, यह भी आपके पास 10 हो जाएगा। रोहम्बस में सारे साइड्स सेम होते हैं। रोहम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस यही है कि इसके डायगोनल्स आपके 90 डिग्री पे कट करते हैं और एंगल 90 नहीं होता है, हो भी सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इसके डायगोनल्स आप एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। आपके पास एक डायगोनल दिया गया है 12, तो अगर सपोज करो कि आप AC को 12 मान लेते हो और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है ये O मान लेते हैं, तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस 6 हो जाएगा। तो माई मेन फोकस इज टू फाइंड OD। अब OD अगर फाइंड करते हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देख सकते हैं कि 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ x स्क्वायर या OD स्क्वायर आप लिख सकते हो। यहाँ से आप x को फाइंड करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस ऑफ 6 स्क्वायर। तो बच्चों इसके जो वैल्यूज आएंगे ये आपका आ जाएगा 100 माइनस ऑफ 36, इट विल कम आउट एज 8। तो x के वैल्यू जो हमारे पास आ रहे हैं वो आपके पास 8 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स x आ गया 8, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस OD जो है OD आपके पास 8 आए हैं। तो आपके पास जो डायगोनल होगा BD डायगोनल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OD यानी कि 2 इंटू 8, तो ये आपके आ रहा है वैल्यूज 16। 2 इंटू 8 आपके पास यह जो वैल्यूज होंगे यह आपके 16 आ रहे हैं। एरिया क्या होता है रोहम्बस का, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया अगर हम फाइंड करें एरिया ऑफ रोहम्बस, तो एरिया हमारा हो जाएगा हाफ D1 D2, हाफ D1 D2। आपको दोनों डायगोनल पता है, एक डायगोनल का लेंथ आपके पास 16 है और एक डायगोनल का लेंथ आपके पास 12 है। तो बच्चों आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो 8 12 8 जा आपके पास 96 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 7-8 में पूछे जाते हैं। 7-8 के बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। ओके 93 आसान क्वेश्चंस है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। एक आपका SI/CI वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी। 2 boys begin together to write out a booklet containing 817 लाइन्स। ऐसा गिवन है बच्चों इसमें कि दो बॉयज ने
ट्राई किया कि उसको टोटल 817 लाइन लिखने हैं। एक ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और एक ने लास्ट से स्टार्ट किया। क्लियर है? दोनों के स्पीड्स आपको गिवन है कि फर्स्ट बॉय का जो स्पीड है वो 200 लाइन एन आवर है। तो टोटल अगर हम लाइन देखें कि टोटल हमारे पास जो लाइन है, टोटल लाइंस हमारे पास कितने हैं, तो टोटल लाइन इज 817 इज टोटल लाइन। स्पीड्स आपके पास गिवन है। अगर हम बॉय 1 का स्पीड देखेंगे तो बॉय 1 का हमारा स्पीड आ जाता है 200 लाइन पर आवर, 200 पर आवर इसके स्पीड हो गए। और बॉय 2 का अगर आप स्पीड देखते हो तो बॉय 2 का स्पीड है आपके पास, बॉय 2 का स्पीड है 150 लाइन्स पर एन आवर। तो इसके पास बच्चों हो गया 150 पर आवर। इज दिस क्लियर टू यू? आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अगर दोनों टाइप कर रहे होंगे लाइन को तो किस लाइन पे जाके वो मीट करेंगे, ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है। तो बच्चों हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सपोज कीजिए टोटल आपके पास है 817, तो ये 2 घंटे में कितना टाइप किया होगा? 2 घंटे में बॉय 1 जो है हमारा, बॉय 1 स्टार्टिंग से चल रहा है, स्टार्ट फर्स्ट पेज से, वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया है। तो 2 घंटे में फर्स्ट आवर्स में उसने 200 देखा होगा, उसके बाद 200 टाइप किया होगा। तो 2 घंटे में उसने टोटल 400 माय डियर स्टूडेंट्स वो टाइप कर चुका होगा लाइन को। नेक्स्ट किसी ने बॉय 2 ने लास्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, बॉय 2 ने लास्ट से स्टार्ट किया। तो बॉय 2 अगर लास्ट से स्टार्ट करता है तो 150 1 आवर में, ठीक है, 150 जो है वो 1 आवर में 150 को टाइप करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 150, उसके बाद नेक्स्ट आवर्स 150। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल इसने 2 घंटे में टाइप किया होगा 300। तो टोटल 700 लाइन टाइप हो चुके हैं। अब बचे कितने रह गए? 817 में से आप 700 अगर माइनस कर देते हो तो वो आपके पास बचता है 117। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम ये मान लेते हैं कि जब वो मीट किए होंगे तो टोटल ड्यूरेशंस तो सेम होगा, ठीक है, टोटल ड्यूरेशंस जो राइट किए होंगे वो तो सेम रहेगा। तो हमने मान लिया कि टी टाइम के बाद अब वो मीट करेंगे। तो टी टाइम को ऐड करके आपके पास जो वो वैल्यूज होने चाहिए 117 आना चाहिए। तो हम ये इसे इक्वेट कर देंगे तो 117 और इसका स्पीड आपके पास 200 है, 200 इंटू टी प्लस ये हो जाएगा आपका 150 इंटू टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास 350 टी आ गया इज इक्वल्स टू 117। तो t का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 117 डिवाइडेड बाय 350, ठीक है, इतने टाइम के बाद वो मिलेंगे। अब इतने टाइम में बॉय 1 या बॉय 2 जो है कितना लाइन को रीड कर लिया होगा, ये जो पूछा गया है, ऑप्शंस दिया गया है वो स्टार्टिंग से दिए गए हैं। तो आपको अच्छा रहेगा कि आप ये जो टाइम है बॉय 1 वाले स्पीड में पुट कर देंगे। तो बॉय 1 ने 400 तो पहले ही रीड कर लिया है, 400 पहले राइट कर चुका है। अब इतने टाइम में कितना राइट किया होगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो टाइम है और उसके स्पीड, तो स्पीड इनटू टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 117 बाई 350 और इसके स्पीड्स हैं आपको 200 पर आवर। आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू 66.8 समथिंग आ रहा है। इसके वैल्यूज जो हैं आपको 66.8 आ रहा होगा बच्चों। तो 66.8 तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स वो 467th लाइन पे जाके मीट किए होंगे, ठीक है, इस लाइन पे मीट किए होंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चंस, लेकिन इससे ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको SICI वाले में था। ये क्वेश्चंस आप तब भी बना सकते थे, ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 94 भी काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपने क्लास में भी सॉल्व किया होगा और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आपको गेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ESE में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे। तो बच्चों इस क्वेश्चंस में ये गिवन है कि रोहित स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम्स। वो जो है 40% वो फूड आइटम्स पे खर्च करता है, ठीक है, 40% फूड आइटम्स पे उसने खर्च कर दिया। 50% ऑफ द रिमेनिंग, ये देखना जरूरी है क्योंकि जब आप जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस चीज़ों को आप मिस कर देते हैं। आपको ये लगता है कि 40% उसने उस पर स्पेंड कर दिया, 50% इस पे स्पेंड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ्स एंड कन्वीनियंस, ही सेव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग का वो 1/3 बचाता है
amount after spending on food, cloth and convenience. If he saves rupees 19,200 every year, हर साल जो है वो इतना सेव कर रहा है, तो व्हाट इज द मंथली इनकम, आपको मंथली इनकम पूछा गया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ट्री डायग्राम से बना सकते हैं। अगर आप हमसे पढ़े हो तो ट्री डायग्राम से आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो और आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को 100 मान लो या x मान के आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये मानते हैं कि ये हमारा रोहित है और इसके जो इनकम्स हैं, इनकम्स माय डियर स्टूडेंट्स हमने मान लिया है कि 100 है पर मंथ, ठीक है, 100 इसका पर मंथ इसका इनकम हो गया है, ठीक है, ये हमने 100 माना है। अब आपको ये गिवन है कि 40% ऑफ द मंथली इनकम ऑन फूड आइटम्स, तो फूड आइटम्स में फूड में वो खर्च कितना कर रहा है, तो फूड में बच्चों वो खर्च कर रहा है आपको 40% है। तो 100 जब आप मानते हो तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस हो जाता है कि 100 का परसेंटेज 40 आप डायरेक्टली लिख सकते थे, यहाँ पे ये 40 होगा। नेक्स्ट आपको क्लॉथ एंड कन्वीनियंस पे 50% फूड आइटम्स 40% एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग कितना रहा, अगर ये 40% खर्च कर दिया फूड पे तो रिमेनिंग रह गया आपका 60%, और 60% यानी कि वो 100 का 60 हो जाएगा। अब इसमें से वो क्या कर रहा है कि 50% वो क्लॉथ्स पे खर्च कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने फिर से डिवाइड किया तो ये आपका क्लॉथ हो गया, क्लॉथ पे वो 50% खर्च कर रहा है, तो क्लॉथ पे आपको 50% हो गया। और उसके बाद बचा कितना, उसके पास रिमेनिंग कितना अमाउंट है, तो रिमेनिंग माय डियर स्टूडेंट्स 50% है, तो रिमेनिंग 50% होंगे यहाँ पे, तो रिमेनिंग 50% है। और काफ़ी बच्चे जो है यहीं पे मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, वो यहीं पे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये 40, 60 और 60 का अगर आप 50% कैलकुलेट करोगे तो ये 30 होगा और यह भी आपके पास 30 बचेगा। इसका 1/3, इसके 1/3 जो है यह आपका सेविंग है, 1/3 बच्चों आपका सेविंग हो जाता है। तो 30 का अगर आप 1/3 फाइंड करें, 30 का आप 1/3 फाइंड करते हो तो ये आपके पास ₹10 हो गया सेविंग। ये ₹10 कब आया बच्चों, ये ₹10 तब आया जब आपका मंथली इनकम जो है वो 100 था, ठीक है, और एक मंथ में आपने ₹10 सेव किया। इज दिस क्लियर? तो 12 मंथ में वो 120 हो जाता, ठीक है, 12 मंथ में हम सेव कर रहे हैं 120 और हमारा जो मंथली इनकम है वो 100 है, ठीक है, ऐसा हमने माना है मंथली इनकम को 100 और हमारा 1 मंथ में ₹10 है तो 12 मंथ में 120 हो जाएगा। आपको ये गिवन है कि अगर वह ₹19,200 हर साल सेव करता है तो 19,200 अगर वो सेव करता है तो उसके टोटल मंथली इनकम क्या होंगे। तो यूनिटरी मेथड से आप इसको अब सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यूज जो है वो आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू आपका 19200। तो काफ़ी आसान कैलकुलेशन है और ये आपके पास आ रहा होगा शायद 16,000 आपके पास वैल्यूज आ रहे होंगे, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका वैल्यू जो है आपके पास आ रहा होगा 16,000। इज दिस क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चंस था और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है गेट एग्जामिनेशंस का ESE का तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमारा 94 क्वेश्चंस था और एक क्वेश्चंस और भी बचे रह गए हैं तो उसे भी मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर माय डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 74 आपको थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस था। क्वेश्चन नंबर 74 आप सभी स्टूडेंट्स देखें, ये हो सकता है कि काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको 3 फैक्ट दिया गया है। पहला फैक्ट ये है गिवन इस क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट्स, पहले फैक्ट ये गिवन है कि जेसिका हैज 4 चिल्ड्रन, जेसिका के जो है 4 बच्चे थे, ठीक है, 2 ऑफ, और सेकेंड फैक्ट है आपके पास कि 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्लू आई, 2 चिल्ड्रन के पास ब्लू आई है, एंड द 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्राउन आई, 2 को ब्राउन आई है, ठीक है, 4 बच्चे हैं उसके पास। मान लो कि कोई भी बच्चा है तो हम ये कह सकते हैं एक C1 हो गया, एक C2 हो गया, एक आपके पास C3 हो गया और एक C4 है। ये आपको फैक्ट 1 से पता चलता है, ठीक है, आपको ये फैक्ट 1 से पता चला। अगर हम फैक्ट 2 की बात करें तो फैक्ट 2 जो है माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट 2 आपको क्या कह रहा है कि 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्लू आई,
तो 2 के पास जो है ब्लू आई है, लेकिन किसके किसके ब्लू आई है ये आपको नहीं गिवन है। तो 2 के ब्लू आई हो गए एंड 2 ऑफ द चिल्ड्रन है ब्राउन आई, 2 के बच्चों जो है वो ब्राउन आई है, ठीक है, 2 का ब्राउन आई है, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखो फैक्ट 3 है, हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस आर गर्ल, आधे जो बच्चे हैं वो गर्ल हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फैक्ट 3 है। तो फैक्ट 3 अगर आपको ये गिवन है कि 50% ऑफ देम आर गर्ल, तो 2 आपके पास हो गए, 2 आर गर्ल्स, ठीक है। हाफ का मतलब ये हो गया कि 2 आर गर्ल्स। इज दिस क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चंस को आप पढ़ें कि क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या गया है। इफ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट, आपको ये बोला गया है कि अगर 3 जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स हैं वो अगर फैक्ट हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी फैक्ट, वह भी फैक्ट होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम ये 3 स्टेटमेंट्स को सही मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं, तो अगर आप पहला ये पढ़ोगे तो एटलीस्ट 1 गर्ल हैज अ ब्लू आई, क्या आपको ये तीनों को फैक्ट मानने से आपको ये पता चल रहा है कि वो एक कम से कम एक लड़की को ब्लू आई होगा? तो ये मस्ट लिखा हुआ है, विच ऑल्सो मस्ट बी ऑल्सो बी अ फैक्ट, तो ये बच्चों फैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन, 2 ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, 2 जो चिल्ड्रन हैं वो बॉयज हैं, तो ये आपका फैक्ट है। आप मस्ट बोल सकते हो कि हाँ 2 बच्चे जो हैं वो बॉयज हैं, क्योंकि 2 आर गर्ल्स और ये तीनों फैक्ट को हम सही मान रहे हैं। अगर ये तीनों फैक्ट हमारा सही है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 2 बच्चे होंगे वो क्या होंगे कि बॉयज होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द बॉयज हैव ब्राउन आइज, तो बॉयज का ब्राउन आइज होगा। तो ऐसा यहाँ से अगर हम इस तीनों फैक्ट को सही मानते हैं तो ये बच्चों आप नहीं कह सकते हो कि यह एक फैक्ट है या यह एक सही होगा मस्ट, ये आप नहीं कह सकते हैं। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस में देखेंगे तो सेलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड, तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर्स आ जाएगा। 1 3 है, 2 3 है, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉन फैक्ट, और एक ऑप्शन नन ऑफ द स्टेटमेंट्स भी दिया गया है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है कि काफी स्टूडेंट्स ने डी भी टिक किया है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि क्वेश्चंस में आपको फैक्ट दिए गए हैं कि 3 फैक्ट है, और इसको आप देख के ऐसा क्या बता सकते हो कि इसमें से भी कोई ना कोई फैक्ट होगा, ठीक है। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते थे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका फैक्ट है, अगर ये तीनों सही है तो वह भी सही होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे जनरल एप्टीट्यूड सेक्शंस में। तो बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चंस के तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे, और अगर टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो टोटल 11 क्वेश्चंस में आप 10 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपका जो 77 है, 77 क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेंदी था, ठीक है। जैसे मैं आपको एसआई एंड सीआई की बात करूं तो अब ईएससी एग्जामिनेशंस में भी एक ट्रेंड बन चुका है कि एसआई एंड सीआई से भी एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी एसआई सीआई से पूछा गया था क्वेश्चंस, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि अपकमिंग जो आपका एग्जामिनेशंस होगा उसमें भी एसआई एंड सीआई के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और बाकी के जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आसान थे, आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो अगर किसी भी बच्चों को जनरल एप्टीट्यूड में 22 में अगर आप स्कोर 18 कर रहे हो या 20 कर रहे हो तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। आप रेस्ट आप देखें, रेस्ट पेपर में आपका कितना स्कोर हो रहा है। जनरल एप्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू मी वाज वेरी इजी एंड यू कैन इजीली स्कोर 20 to 22 मार्क्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसी तरह से पढ़ते रहें, और अब जो है नेक्स्ट फैकल्टी आएंगे और आपको और भी सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.
Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it.
Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Dear students, hope you have done well. Now, in engineering mathematics, we got 14 questions. Now, I am going to give the hints and answers for these questions, detailed solutions. Now, problem number 61. This is, I am discussing set B. In set B, problem number 61. Now, by integration, the area bounded by the straight lines, y is equal to 4 minus x, y is equal to 3x and 3y equal to x. So, x-axis, y-axis. Now, y is equal to 4 minus x, y is equal to 3x. Y equal to 3x, x equal to 3y, y is equal to 4 minus x. This point of intersection is 1, 3. This point of intersection is 3, 1. Now 0, 0. Now I am going to fix vertical strip. When you fix vertical strip always gives y limits. Observe. This is x equal to 1, x equal to 0. Between 0 to 1, if you fix vertical strip, lower limit is on y equal to x by 3. Upper limit is on y is equal to 3x. From 1 to till 3, x equal to 3. If you fix vertical strip, lower limit is
y equal to x by 3. Upper limit is y equal to 4 minus x. Now, area is given by double integral when x varies from 0 to 1, y varies from x by 3 to 3x dy dx plus integral 1 to 3 integral y is equal to x by 3 to 4 minus x dy dx. Now, so in this problem, by taking the limits like that, from 0 to 1, this area is given by first integral. From 1 to 3, x by 3 to 4 minus x dy dx gives us the remaining area. Now, if you integrate this, after integration, you will get 24 by 6, that is 4. So, 4 is the correct answer to this problem. So, correct answer is 4 square units, that is third option. Next problem. In this problem, the power series is provided log 1 plus x by 1 minus x. Now, log 1 plus x log 1 plus x expansion is x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 by 4 plus and so on. Log 1 minus x expansion is minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x power 4 by 4 and so on. If you subtract equation 2 from equation 1, minus plus log 1 plus x minus log 1 minus x is 2x plus 2 into x cube by 3 plus and so on. Log m minus log n, log 1 plus x by 1 minus x equal to 2 of x plus x cube by 3 plus and so on. Therefore, correct answer is 2 of x plus x cube by 3 plus x cube by x power 5 by 5 plus and so on. So, third option. Understood? Next problem. The mean value of y is equal to 3x square plus 4x plus 1 between x equal to minus 1 and x equal to 2. The mean value. So, here the mean value of y equal to 3x square plus 4x plus 1 between x equal to minus 1 to x equal to 2. You should not apply mean value theorem because he has not questioned what is the value of C when we apply mean value theorem. He has questioned average value of y between x equal to minus 1 to x equal to 2. So, first we have to calculate integral a to b y dx, that gives us area. So, from minus 1 to 3, how many units you have? 3 units. That's why that area we have to divide by 3. That gives average value. Now, integral area is equal to integral minus 1 to 2 3x square plus 4x plus 1 dx, that is 3 into x cube by 3 plus 4 into x square by 2 plus x from minus 1 to 2. Now, 2 cube 8 plus 2 square, that is 8 plus 2
minus minus 1, here plus 2 minus 1, that is 18 minus 0, that is 18. Area is 18. Now mean value is given by area 18 by upper limit minus lower limit. Upper limit is 2, lower limit is minus 1. 2 minus of minus 1, that is 18 by 3, that is 6. So the correct answer is 6 in this problem. Third option is correct. Next problem. What is the length of the curve x is equal to 2 cos cube theta and y is equal to 2 sin cube theta? X equal to 2 cos cube theta and y is equal to 2 sin cube theta. Here x and y are in parametric form. When x and y are in parametric form, the length of the arc L is given by integral t1 to t2, here theta 1 to theta 2, square root of dx by d theta whole square plus dy by d theta whole square d theta. Now, if you calculate dx by d theta, 6 cos square theta into differentiation of cos theta is minus sin theta. Here dy by d theta, that is 6 sin square theta into differentiation of sin theta is cos theta. Now, integral the length of the arc L is equal to integral 0 to pi by 2 square root of dx by d theta whole square, that is 36 cos power 4 theta sin square theta plus 36 sin power 4 theta cos square theta multiplied with d theta, that is integral 0 to pi by 2 square root of 36 cos square theta into sin square theta common. Here we have cos square theta plus sin square theta into d theta, that is nothing but integral 0 to pi by 2 6 cos theta sin theta d theta, that is nothing but 3 multiplied with 0 to pi by 2 sin 2 theta d theta. After integration, we get the value 3. So correct answer is 3. In this problem, the correct answer is 3. Understood? Next problem. What is the largest eigenvalue of modulus of the matrix A 2, 3, 2, 4, 3, 5, 3, 2, 9 with initial vector 1, 1, 1 by power method? It is iterative method. Observe here, to implement power method, y1 is equal to matrix A into x naught, where A is 2, 3, 2, 4, 3, 5, 3, 2, 9, x naught given vector 1, 1, 1. By multiplying this, we get 2 plus 3 plus 2, 7, 4 plus 3 plus 5, 12, 3 plus 2 plus 9, 14. Now we have to use scaling factor. Let us take 7 common. The first value 7 I am taking common. Then you will get 7 multiplied with 1. Here 12 by 7
here 14 by 7. That can be written as 7 into 1. 12 by 7 is 1.71. That is 2. This is nothing but K1 X1. So here K1 is 7. Now Y2 is equal to AX1. Here X1, we got X1. So A is 232, 435, 329 multiplied with the vector 1, 1.712. Multiplying this, we get, after multiplication we get 11.13, next 19.13 and 24.42. Let us take 11.13 common. 11.13 multiplied with 1 by 19.13 by 11.13, 1.72. 24.42 by 11.13, 2.19. That is K2 X2. Now, error is nothing but K2 minus K1 by K2 multiplied with 100. 11.13 minus 7 by 11.13 into 100. That gives us 37.11%. So here we have error is 37.11. Now, continuation. Now, Y2 is AX1. So, Y3 is AX2. Y3 is AX2. Y3 is AX2. Matrix A. Matrix A is 232 and 435, 329 multiplied with X2. We got X2 value 1. By taking 11.13 common, we got 1, 1.72 and 2.19. Now, if you calculate this after multiplication, you will get 11.54, 20.11 and 26.15. Let us take 11.54 common. You will get here 1. Here 1.74, 1.74 and 2.26. That is K3 X3. Next we have to calculate error. How to calculate error? Error is K3 minus K2 by K3 into 100. If you substitute and simplify, you will get 3.55%. Next, Y4 equal to AX3. A is matrix A, 232, 435, 329. X3, 1, 1.74, 2.26. Now multiply this. After multiplication, you will get
11.74, 20.52 and 26.82. Let us take 11.74 common. You will get 1, 1.75, 2.28. That is K4 X4. If you continue like this, X6, you have, in the case of Y5 later Y6 gives you, Y6 gives you 11.84, 11.84 and 20.65 and 27.02. So by taking 11.84 common, you will get 1, here 1.75 and 2.28. Understood? So among these values, the largest eigenvalue is 11.84. You can write 11.84. So continue the same process. So wherever two successive iterations are same, then we can stop the iterative process. So the largest eigenvalue is 11.84. So 11.84 is the correct answer in this problem. So it is given in first option. 11.84 is first option. That is power method. Next one. Reduce the matrix A to the tridiagonal form. Reduce the matrix A into tridiagonal form. So in this problem, matrix is 1, 3, 4. Three, 2, -1 and 4, -1, 1. To reduce the matrix into tridiagonal form, first we have to calculate S1, that is square root of A21 square plus A31 square, square root of 3 square plus 4 square, that is square root of 25, that is 5. Square root of 25, that is 5. Here S1 value greater than 0 and also A21 value greater than 0. When A21 value greater than 0, we have to take sin A21 equal to +1 when A21 greater than 0. A21, yes, sin of A21 equal to -1 when A21 is less than 0. In our problem, A21 is 3, which is greater than 0. That's why sin of A21 I have to take +1. Now, we have to calculate V21. V11 is 0. V21 is square root of 1 by 2 of 1 plus A21 by S1, that is square root of 1 by 2 of 1 plus mod A21 3 by 5, that is square root of 0.8. Square root of 0.8 is 0.8944. 0.8944. Now the formula to calculate V31 is A31 sin A21 by 2 into V21 S1, that is A31 4 sin A21 +1 by 2 into V21.
V21 value 0.8944 into S1 value 5. Simplify this, we get after simplification 0.4472. 0.4472. Take the screenshot. Next. V1 is equal to 0, A21, A31. That is 0, A21 is 0.8944. Next, this is V21, V31. V21 is 0.8944, V31 is 0.4472. Now, that is V1. Now, we have to calculate P1. P1 is equal to identity matrix minus 2 into V1 transpose. That is identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 minus 2 multiplied with P1 0.8944 and 0.4472 multiplied with V1 transpose 0.8944, 0.4472. After simplifying this, we get 1 0 0 0 0 here minus 0.5988 minus 0.7532 7552 minus 0.7552 and 0.6002. Next, we have to calculate P1 A1 equal to P1 A0 P1. P1 is this matrix. A0 is given matrix, matrix A, and then P1. Same matrix you have to write. After multiplication, you will get 1 minus 5 0, here minus 5 0, here 2 by 5, 1 by 5, 1 by 5 and 13 by 5. So 1 minus 5 0, minus 5 2 by 5, 1 by 5, 0 1 by 5, 13 by 5 is the correct answer. Correct answer is in first option. So option A is correct. The problem consumes time. Calculation is there. Okay. After calculating P1 A0 P1, you will get this answer. So answer is first option. Next problem. From Taylor series expansion for y of x, the value of y at 0.1 correct to 4 decimal places. If y of x satisfies y dash equal to x minus y square and y of 0 equal to 1. Here dy by dx is x minus y square. Therefore, y is dy by dx is x minus y square. Y dash is x minus y square. Y dash is x minus y square. Y of 0 is equal to 1. Y of 0 equal to 1. We have to apply
Taylor series method. Okay, na? Now, y dash equal to x minus y square. Calculate y double dash 1 minus 2y into y dash. Y double dash 0 minus 2 into y double dash plus y dash into y dash, that is y dash whole square. Now, substitute the values. When x naught is 0, y naught is 1, what is y naught dash? Y naught dash is x naught minus y naught square. X naught is 0, y naught 1, 1 square, that is minus 1. Next, y naught double dash equal to 1 minus 2y naught into y naught dash, that is 1 minus 2 into y naught is 1, y naught dash is minus 1, that is 1 plus 2, 3. Next, y naught triple dash is minus 2 of y naught into y naught double dash plus y naught dash whole square. Substitute the value. Minus 2 of y naught is 1, y naught double dash is 3 plus y naught dash is minus 1 whole square. If you simplify this, 3 plus 1, 4, 4 to the 8, minus 8. So here y naught triple dash is minus 8. Next, we have to substitute in the formula. Here h is 0.1. y1 equal to y naught plus h into y naught dash plus h square by 2 factorial into y naught double dash plus h cube by 3 factorial into y naught triple dash and so on. Now here y naught value 1, h value 0.1, y naught dash is minus 1, h value 0.1 whole square by 2 factorial into y naught double dash is 3 plus 0.1 whole cube by 3 factorial into y naught triple dash is minus 8. After simplifying this, we get 0.914 or 9138. So correct answer is 0.9138. So first option. Understood? Next problem. What is the slope of the curve? What is the shape of the curve represented by x by 5 equal to x by 5 is equal to square root of 1 plus y by 2 whole square. So squaring on both sides, x square by 25 is equal to 1 plus y square by 4. X square by 25 minus y square by 4 is equal to 1. It is in the form of x square by a square minus y square by b square equal to 1. This is the shape of hyperbola. So first option is correct. Hyperbola is the correct answer. X square by a square minus y square by b square equal to 1. Next problem. What is the particular solution of the differential equation? Five into dy by dx plus 2x equal to 3. Now, dy by dx equal to 3 minus 2x by 5. 3 minus 2x by 5.
So the auxiliary equation is, if you write in operator form, dy is equal to 3 by 5 minus 2x by 5. Now the auxiliary equation is m is equal to 0. Therefore complementary function is c1 e power 0x, that is c1. Now particular integral 1 by d of 3 by 5 minus 2x by 5. 1 by d is nothing but integration, that is 3x by 5 minus 2 by 5 into x square by 2, that is 3x minus 3x by 5 minus x square by 5. Now the solution is y is equal to c1 plus 3x by 5 minus x square by 5. Now the boundary condition is y equal to 7 by 5 when x equal to 2. When x equal to 2, y is equal to 7 by 5. Therefore 7 by 5 is equal to c1 plus 3 to the 6 by 5 minus 4 by 5. Therefore c1 is equal to 5 by 5, 1. Therefore the solution is y is equal to 3x by 5 minus x square by 5 plus 1. 3x by 5 minus x square by 5 plus 1. So 3x by 5 minus x square by 5 plus 1 is first option. Option A is correct. In this problem, option A is correct. Next one. Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Next problem. The value of L inverse of 5s square minus 5s square plus 8s minus 1 by s plus 3 into s square plus 1. First, we have to calculate partial fractions.
5s square plus 8s minus 1 by s plus 3 into s square plus 1. This is a linear factor, that's why a by s plus 3 plus this is irreducible polynomial, that's why bs plus c by s square plus 1. Now, after that, by taking LCM, 5s square plus 8s minus 1 equal to a into s square plus 1 plus bs plus c into s plus 3. By equating coefficients of s square on both sides, coefficients of s on both sides, constant terms on both sides, we get three equations. One equation is a plus b is equal to 5. Another equation is 3b plus c equal to 8 minus a plus 3c equal to minus 1. By equating coefficients of s square on both sides, we got this equation. Coefficients of s on both sides, we got this equation. Constant terms on both sides, we got this equation. By solving these three equations, we get the value of a. A is 2, b is 3 and c is minus 1. A is 2, b is 3 and c is minus 1. By substituting the values of a, b, c in this equation, we get 5s square plus 8s minus 1 by s plus 3 into s square plus 1 is equal to 2 by s plus 3 plus 3s minus 1 by s square plus 1. So, if you take inverse Laplace on both sides, L inverse of 5s square plus 8s minus 1 by s plus 3 into s square plus 1 is L inverse of 2 by s plus 3 plus L inverse of 3s by s square plus 1 minus L inverse of 1 by s square plus 1. This is 2 into e power minus 3t plus 3 into cos t minus sin t. So, 2 into e power minus 3t plus 3 cos t minus sin t. Therefore, correct answer is first option. Next problem. What is the Laplace transform of 2 e power 3t? Laplace transform of 2 e power 3t 4 cos 2t minus 5 sin 2t, that is 8 multiplied with e power 3t cos 2t minus 10 e power 3t sin 2t. Next, Laplace transform of 8 e power 3t cos 2t. 8 into Laplace transform of cos 2t is s by s square plus 4. S by s square plus 4. When it is multiplied with e power 3t, s minus 3 by s minus 3 whole square plus 4. Next, minus 10 into Laplace transform of sin 2t is 2 by s square plus 4. Actually, e power 3t is there, that's why s must be replaced by s minus 3. So, 8s minus 24 by s square minus 6s plus 9 plus 4 plus 13 minus 20 by
minus 20 by s square minus 6s plus 13. That is nothing but 8s minus 44 by s square minus 6s plus 13. 8s minus 44 by s square minus 6s plus 13 is the correct answer. So, correct option is fourth option. Last option is correct. Next problem. A batch of 100 capacitors a batch of 100 capacitors, 73 which are within the required tolerance values, 73 are in the required tolerance values, 17 are below the required tolerance values, 17. Next, remaining are above the required tolerance values. Remaining means 10. Now total 100. Now, what is the probability that when a randomly selecting capacitor, then a second capacitor, first one's capacitor is selected, next second one is selected. If both are within the required tolerance values, both are within the required means this is favorable case. When selecting with replacement, when it is with replacement, first one 73C1 by 100C1 multiplied with, again that capacitor is replaced. So 73C1 by 100C1, that is 0.73 multiplied with 0.73. 0.73 multiplied with 0.73 is 0.5329. So, correct answer is second option. Second option is correct. Next problem. The value of integral 0 to 4 is square root of 16 minus x square. Whenever square root of a square minus x square is there, put x equal to a sin theta. So, here put x equal to 4 sin theta, then dx is 4 cos theta d theta. When x is 0, sin theta is 0. When x is 4, sin theta is 1, theta is pi by 2. Now, the value of integral 0 to 4 square root of 16 minus x square dx is integral 0 to pi by 2 square root of 16 minus 16 sin square theta, that is 16 cos square theta dx 4 cos theta d theta, that is integral 0 to pi by 2 4 cos theta into 4 cos theta 16 cos square theta d theta, that is 16. Integral cos square theta d theta is, applying reduction rule, 1 by 2 into pi by 2, that is 4 pi. So, correct answer is 4 pi. So, last option is correct. 4 pi is the correct answer. Next problem. Integral 0 to 2 3x by square root of 2x square plus 1 dx. In this problem, let us take 2x square plus 1 is t.
when you differentiate this, 4x dx equal to dt. X dx is in numerator, that's why dt by 4. When x is 0, t is 1. When x is 2, t is 2 square, 4, 4 to 8, 8 plus 1, 9. Therefore, the integral is 1 to 9, 3 into x dx. X dx is nothing but dt by 4 by root t. That is integral 1 to 9, 3 by 4 into t power minus 1 by 2 dt. 3 by 4 t power minus 1 by 2 dt. Now, continuation. Three by 4 integral 1 to 9 t power minus 1 by 2 dt. 3 by 4. After integration, t power 1 by 2 by 1 by 2 from 1 to 9. That is 3 by 4 into 2 by 1, 9 power 1 by 2 minus 1 power 1 by 2. So here 3 minus 1, 2. 2 to the 4, 4, 4 cancel. Final result is 3. So the correct answer is 3, which is given in option, third option. Third option. C is the correct answer. Understood? Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Academy. Let's crack it. Hello my dear students. Now I am going to discuss the questions of the standards and quality practices in production. Questions काफ़ी आसान थे.
आप क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस पढ़ के आप आंसर्स कर सकते हो। लास्ट ईयर के कंपेरेटिव स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी के जो क्वेश्चंस थे काफ़ी ईजी थे इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर्स। टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी से। तो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चंस में पूछा गया है, इन दिस क्वेश्चंस इट इज आस्क्ड दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन। आपको प्रोडक्शंस के बारे में ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मे लीड टू सिकनेस। ये आपको बोला गया कि क्या सब एस्पेक्ट्स हैं प्रोडक्शंस में जिससे कि सिकनेस हो सकता है। तो पहले ऑप्शंस अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अगर हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज कर दें तो यह भी एक सिकनेस है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका एक सिकनेस है, मेजर एस्पेक्ट्स है प्रोडक्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड इज डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। काफ़ी स्टूडेंट्स इसे क्वालिटी अगर देखेंगे आप तो क्वालिटी अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता तो ये सिकनेस होता, लेकिन ये गिवन है क्वांटिटी, दैट इज नॉट अ सिकनेस इन द प्रोडक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 वन ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। You can also see the question option number 3, quality of product not meeting the standards customer expectations। अगर आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोडक्शन में एक सिकनेस की तरह काम करता है। प्रोड्यूसिंग मोर क्वांटिटी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बना देते हो, जितने डिमांड हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा बना दोगे तो वो भी एक सिकनेस है, उससे भी हम बोल सकते हैं कि एक एस्पेक्ट्स है प्रोडक्शन में जो कि सिकनेस काउज कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम के क्या सब सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टीम वर्क एंड एम्प्लॉय कम एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नोट से पूछे गए हैं। क्लास नोट्स में आपको पढ़ाया जाता है कि एलिमेंट्स टीक्यूएम के क्या सब हैं। तो टीम वर्क एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। फीडबैक मैकेनिज्म, ये भी आपका एक एस्पेक्ट, एक एलिमेंट्स होता है टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग डिवीजन ऑफ लेबर, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम। और एक रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट, जिसमें कि हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे आते हैं आपको एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 it is asked the quality characteristics can be categorized in which of the following groups। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेंसरी में आ जाता है बच्चों कि किस तरह के वो चीज़ें दिखते हैं, उसके शेप साइज, तो ये भी आपका एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइम ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चारों के चारों जो है ये आपको कैटेगराइज कर सकते हैं क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4, option number A, it is not visible in the options. Okay my dear student, option number A is the correct. Now let's see the next question, question number 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे ये पूछा गया है कि आपको कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट क्या सब है। तो क्वालिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें, क्वालिटी कॉस्ट कैटेगरीज ऑफ द फॉर द क्वालिटी कॉस्ट, कैटेगरीज जो आप क्लासीफाई करते हैं, एक रहता है इंटरनल फेल्योर कॉस्ट, एक एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट। तो आप ये क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। प्रोडक्शन कॉस्ट आपका क्वालिटी कॉस्ट में मेजर कैटेगरीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा एक प्रिवेंशन, अप्रेजल और इंटरनल फेल्योर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट। पहले हम इसे दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, एक क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। इज दिस क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसके अंदर आपको प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट आता है। तो मेजर कैटेगरीज पूछे गए थे क्वालिटी कॉस्ट के, तो मेजर कैटेगरीज आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज 1, 2, 3, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप पढ़ें और इसमें देखिए क्या आपसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में
क्वेश्चन नंबर 34 को बच्चों अगर आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इवेल्युएटिंग सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान जो आप करते हो, सिंगल सैंपल प्लान, डबल सैंपल प्लान, उसमें जो हम सैंपल्स लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ऑप्शन है, इफ रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड फॉर लॉट्स रिजेक्टेड बाय द सैम्पलिंग प्लान इज द एवरेज टोटल इंस्पेक्शन। तो ये आपको डायरेक्ट डिफिनेशन से क्वेश्चन था, डायरेक्ट डिफिनेशन है ये ऑप्शंस माय डियर स्टूडेंट्स, कि उसे हम टोटल एवरेज टोटल इंस्पेक्शंस बोलते हैं। सेकंड ऑप्शंस ये गिवन है, द एवरेज नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड फॉर अ सीरीज ऑफ लॉट्स इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन इज द एवरेज सैंपल नंबर। दिस ऑप्शन इज द आल्सो करेक्ट। Now third option is the average quality level of a series of batches that leave the inspection station after coming for inspection at a certain quality level is the average outgoing quality level। तो AOQL जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसका एग्जैक्ट आपको ये डिफिनेशन ही यहाँ पे पुट कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हैं, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका एसक्यूपी से ही था, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी से था, और इसमें आपसे पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या सब हैं उससे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। तो आप एक एक करके स्टेटमेंट्स को रीड करके आप ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये पहला जो आप देखोगे क्या गिवन है, पहला स्टेटमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन शुड अचीव एंड सस्टेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो एज टू कंटिन्यूअली मीट द परचेजर्स स्टेटेड एंड इम्प्लाइड नीड्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या जो भी कस्टमर चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी चीज़ों को प्लान करें, तो वही तो एक प्रिंसिपल क्वालिटी है ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि आपसे प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। सेकंड है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू इट्स ऑन मैनेजमेंट दैट द इंटेंडेड क्वालिटी इज बेइंग अचीव्ड एंड सस्टेन। ये भी बिल्कुल सही है, जिसको कि हम लोग इम्प्लाइड क्वालिटी बोलते हैं, या जो भी आप एश्योर कर रहे हो उस तरह के क्वालिटीज आप अपने प्रोडक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी बच्चे आपका आ जाता है प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में। थर्ड ऑप्शन आपके पास गिवन है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द परचेजर दैट द इंटेंडेड क्वालिटी इज बीइंग और विल बी अचीव्ड इन द डिलीवर्ड प्रोडक्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका तीनों का तीनों जो है प्रिंसिपल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑप्शंस नंबर 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये जो है आपको कह सकते हो कि कंट्रोल चार्ट या जो क्वालिटी कंट्रोल टूल्स आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। ट्रायल रन्स के रिगार्डिंग पूछा गया कि ट्रायल रन्स क्या सब हैं, इसके क्या सब पर्सपेक्टिव होते हैं, इनसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें तो ट्रायल रन्स प्रोवाइड अ फाइनल चांस टू फाइन ट्यून लेवल्स ऑफ फैक्टर। तो ये पहला आपके पास ऑप्शंस दिया गया है कि पहला आप देखो, ट्रायल रन्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिमेडी द सिचुएशंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, ट्रायल रन कहने का मीनिंग है कि जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में है तभी आप कुछ ना कुछ चेक कर रहे हैं, तो उस समय आपको अगर कहीं पे भी कोई इंप्रूवमेंट का नीड लगेगा तो आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ट्रायल रन्स प्रोवाइड अ फाइनल चांस टू फाइन ट्यून लेवल्स ऑफ अ फैक्टर। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शंस देखो आप, ट्रायल रन्स प्रोवाइड अ चांस टू मेक एनी नीडेड चेंजेज इन द एक्सपेरिमेंट प्लान ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर हमारा कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उसी समय हमने अगर ट्रायल रन किया तो आपको एक चांस दिया जाता है कि आप उसमें कुछ अगर चेंजेस की जरूरत है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल सही है। Trial runs can help considerably in estimating the time to complete a run, the logistical supports required for level changes and the total time needed to complete any experiments। जैसे अगर आप कभी भी ट्रायल रन करते हो तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले चल रहा है या क्या किस स्पीड से है या कब कंप्लीशंस होगा, तो उस चीज़ों को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेवल चेंजेस क्या सब चेंजेस करने चाहिए, टोटल टाइम कितना और लगेगा, तो ये सारे ट्रायल रन्स के अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चंस है। अगर आपके नोट्स में नहीं भी होगा तो बेसिकली आप चारों के चारों ऑप्शंस अगर पढ़े होगे, स्टेटमेंट्स चारों स्टेटमेंट्स अगर आप देखते हैं 1, 2, 3, 4 तो आप स्टेटमेंट्स पढ़ के भी आंसर्स कर सकते हैं। जीएस में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिससे कि आप अगर स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्वेश्चंस में पूछा गया और इसके क्या सब आंसर्स होने चाहिए। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखें, Which of the following is not a source of variation present in every process of constructions। कोई भी प्रोसेस, एवरी प्रोसेस आपको लिखा है कि सारे जो कंस्ट्रक्शंस के प्रोसेस होते हैं उसमें क्या सब वेरिएशंस नहीं होता है। Which of the following is the not a source of variations। The equipment एक सोर्स ऑफ वेरिएशंस है। जब आप कोई भी प्रोडक्शंस करते हैं, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस का रहता है तो इक्विपमेंट भी एक वेरिएशंस है। अगर आप डिफरेंट टाइप्स के
इक्विपमेंट का यूज़ करोगे एक ही चीज़ों के लिए तो हो सकता है कि आपको वो वेरिएशंस आ जाएगा। तो आपका इक्विपमेंट वेरिएशंस है, मटेरियल के कारण भी वेरिएशंस आ जाते हैं। कभी भी अगर मटेरियल के रॉ मटेरियल जिससे भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शंस काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रॉ मटेरियल के चेंजेस के कारण भी क्या होता है कि वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, वो भी एक तरह का आपका सोर्सेस ऑफ वेरिएशंस है। थर्ड है द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट तो बिल्कुल एक सोर्स ऑफ वेरिएशंस है। और फोर्थ है द स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस जो है ये एक सोर्स ऑफ वेरिएशंस नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर कभी भी कोई प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस करना, कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करते हो तो स्पेसिफिकेशंस आपको प्री डिफाइंड होता है कि ये सारे उसके स्पेसिफिकेशंस है, तो उसे हम सोर्स ऑफ वेरिएशंस नहीं बोल सकते हैं। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे आप 8 क्वेश्चंस में इजीली 6 to 7 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, और वो कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नोट से थे। यहाँ पे इस साल जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था, इसमें आपको एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पूछा जाए इन्वेंट्री कंट्रोल से, या आपको लाइन बैलेंसिंग से, या ब्रेक इवन एनालिसिस से, या आप कह सकते हो मेंटेनेंस टॉपिक से। तो अगर इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसा हम यहाँ पे हमने आपको बताया है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो TQM एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर साल क्वेश्चंस आता है। TQM हो गया, 6 सिग्मा हो गया, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हो गए, तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप फ्यूचर में ESE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। अब आपको नेक्स्ट फैकल्टी जो है आगे के सब्जेक्ट्स डील करेंगे। चलिए, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Hi. So after Uma sir and Aman sir have discussed those questions, so let us discuss the GS questions here, and also project management, whatever left over, ICT. I'll deal all those questions there. So the paper was tough, I accept it. So those who have prepared little bit keenly and little bit strongly can answer those questions, right? GS questions was options were so close, questions were also so close, right? Let's see one by one. Observe the first question there. The engineers for a sustainable world meant for using the professional talents to create a more sustainable world was founded in. So it was founded in 2001, and the headquarters, right? One second here. Headquarters, it is founded in 2001, and it is headquartered in Pittsburgh. I'll write down here. So the main agenda of this ESW is nothing but some very good colleges came up together to build very good constructions with better environment condition, I mean to have more sustainable environment there, right? So the headquarter is in Pittsburgh, Pennsylvania. Now again everybody know, so this will be operated in USA, Canada, Africa and Latin American countries. So it was founded in
2001, right? So as I said there, right, all these colleges, the light-minded, right, very good colleges came together to start this organization. So the idea came from Cornell University. So a little bit difficult question, right? But some students who have gone through the test series of Unacademy, the same question was asked, and you can answer this. Those who have gone through our test series can answer this question very, very easily. Chalo, let's go for the next one. Next question. So this is the question, right? Which one of the following is not covered under International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles? On fundamental principles. On fundamental principles and rights and work in 1998, it seems. So which will be your answer there, right? Freedom of association and the right to collective bargaining. Yes, it is the right of the workers there, and your first option is correct, and you are asked to find out not. So what will be your option there? B, the elimination of forced and compulsory labor. Yes, perfectly true. This is a covered under ILO. Third one, the abolition of child labor. You can easily answer this question here. There is no such ambiguity to cannot find out the answer. You can find out the answer very, very easily. Come to the next one, the global impact and migration. This is not covered in ILO. Observe that this is the right. And the remaining principles are elimination of discrimination in respect of employment and occupation is one more principle. Elimination of discrimination in respect of employment and occupation is nothing but one more principle, the fourth one. I hope so I am clear. Chalo. And your option number D will be the answer here. 1 second. Option number D, sorry. Option number D will be your option there. Let's come to the next one. What is the answer? Which one of the following does not come under business ethics, it seems? Observe the question there. So avoiding, break the law comes under business ethics. Comes under business ethics. Avoid actions that are bad for one's image. It comes under business ethics. Avoid action. This is ambiguous, we cannot say this one. And avoid conflict. Yes, it comes under business ethics. Yes, you must not go into conflict of interest. Okay, we have seen this point in business organization ethics also. Come to the next one. So what will be the answer there? And there is an ambiguity in this question here. I'll deal this question little bit later. And observe this question there. This is a normal GA wala question. The Defense Research and Development Organization DRDO has successfully tested, fired medium range subsonic cruise missile Nirbhai from the integrated test range ITR at Chandipur, Orissa. Chandipur, Orissa. So how many of you got this there? Perfectly done. Let's come to the next one. Now what will be the answer there? Which one of the following is not? The question is not, ma. You are asked to find out not. The award was inaugurated in 1991-92. Yes, it is true. Perfectly true. The award comprises a medallion, a certificate and a cash prize of 15 lakh. It seems it is not 15 lakh, it is 25 lakh, and this is your wrong answer. Hope so I am clear. The first recipient was Vishwanathan Anand, perfectly true, and this was changed as Major Dhyan Chand Award. Hope so I am clear. Yes. Come to the next one. Now, how many Indian companies have found a place in 2021 Fortune Global 500 list, it seems? How many? It's a normal random general, current affairs question, and your answer will be 7. Now, what are those 7, right? How many of you know this, right? So, previously, all these things happened in the newspapers only here. You can easily answer this. The first one is Reliance. The 7 are Reliance, SBI, IOCL, Indian Oil Corporation, ONGC, Tata Motors, Bharat Petroleum, next one is Rajesh Exports.
These are the 7 which listed there. I hope so I am clear. Current affairs wala question. Come to the next one. Which one of the following is not an important initiatives under ESE, it seems here? What is this ESE 4.0? So when you are watching this financial terminologies, this year in every test series this question is there. Almost all, even in Unacademy test series we have this question there. ESE 3.0, ESE 2.0, right? For what this is, right? To make sure that PSB, public sector banks, work efficiently. So these initiatives were taken up by Ministry of Finance. So what is the full form of ESE? Can anybody? Enhanced access and service excellence reform agenda. Now under this, which is not, it's in the question asked is which is not. Now smart lending for aspiring India, yes, this is a initiative, right? So to provide more loans to the people by tying up with non-banking financial organizations, all these things are nothing but smart lending for aspiring India. New age 24/7 banking resilient technology, yes, perfectly true. Collaborative banking for synergistic outcomes, right? Coordinative effects there. And parameters of FA index, no, yeah, foreign investment index, this is not included in ESE 4.0. And your D option is right. So how many of you got this? And again, one more very important question, right? Of course, if you write any non-technical paper, this question is there for sure, yeah. This question is there for sure. Which one of the following statements is not correct, it seems here? Not correct regarding the pension PFRDA, right? Where is PFRDA? Okay, it's in Hyderabad, I mean it's in Delhi, right? Now, which is not? Subscribers can continue or defer their NPS account up to the age of 75 years. Yes, you can do it. D option is right. As per the revised norms, any Indian citizen, resident or non-resident and overseas citizen of India between the age of 65 to 70 can join. Yes, this is also true. Now, earlier the eligible age to invest NPS was 18 to 65, now which has been revised to 18 to 70. Yes, it is true. You can extend up to 70 years. It has increased the entry age for national pension system from 60 to 65 years. Now, you're up to 70 years, right? So, your A option is wrong. I hope so clear. General current affairs wala question. Let's see what about the next one. World's largest, we have, so in all the newspapers this article came that you should not miss this answer there. World's largest star sapphire cluster has been found in where? Ratnapura, Sri Lanka, now which is famously called as gem capital. On a backyard of a house of an individual, they have found this, right? So Ratnapura, Sri Lanka. Come to the next one. Next question is based on ICT here. So how many of you have done this correct? 1 second. Which one of the following protocols is designed to provide privacy between two communicating applications with a client and server? If you are going through ICT syllabus, this question you have to damn surely answer. A plain general wala question, right? We have discussed different protocols, and in this the answer will be what? Can anybody in the comment section box? The answer will be secure socket layer protocol, right? This one. Coming to the next one. Which one of the following, next question. Which one of the following is an advantage of branched or intrinsic program, right? Branched or intrinsic program of style in ICT based teaching and learning process. Ab dekho, see here, when the term itself is explanatory, right? Self-explanatory, branched. So observe the options there. Which option is very true? Large frames reduce the time of learning, right? This is the advantage perfectly. Remaining things are not advantages. You can check those things there, right? Come to the next one. Now, which one of the following learnings is a teaching approach that engages students in sustained collaborative and real world investigations? A normal Google wala question there.
So anybody answer there? Project based learning. This is the option there. Let us come to the next one. Which one of the following schemes is used for radio stations within the same region where each radio station has its own frequency? The term, right? This point will give you the answer. Own frequency. The term itself is explanatory. Frequency division multiplexing. How many of you got this point there? Right. Now, I'll go to the next one. Observe this question there. Which one of the following is not included in Nussbaum's basic human functional capabilities, right? Totally there are 10 capabilities, ma. We have done the exact 10. So those who followed my ethics plus course can easily answer this question. Nussbaum, right? It will be 10 central principles, 10 functional capabilities were given. Now, which is not, it seems. Your being able to live a human life in a normal length is true. Being able to use senses, images, thinking and reason is true. Now, laugh, yes. Being able to laugh, play and enjoy recreational activities, yes, true. This is too tough question here, technical wala, right? Those who are in UPSC can easily understand this because they read ethics so strongly when compared to you, right? Being able to earn livelihood and live peacefully is not at all a functional capability of Nussbaum's central principles, right? Hope so clear. How many of you answered this? Now, coming to next one, see here, which one of the following is not a type of virtue for responsible professionalism? The term, right, responsible professionalism, it seems. And again, not. Public spirited virtue is a responsibility. Teamwork is a responsibility. Self-direction virtue, yes, you have to motivate yourself to work towards the company there. Self-realization virtue, it seems. This is not a respective professionalism virtue, right? Done. This one a plain general question, man. Nobody can help you unless until if you learn Davies 8 moral test, which I have done in second chapter in plus course, and Saurabh Pandey sir also done the same course there. Which one of the following is not a Davies 8 moral test, it seems? Harm test. Yes, it is an virtue test. Yes. Professional test. Yes. Acceptability test is not a Davies 8 moral test there, yeah. Yes. Now coming to the next one. Now observe the question there. Arrange the following in hierarchical order suggested by Carroll in 4-part model of corporate social responsibility. In organization ethics, you will be learning about this CSR activities in detail, which we have dealt in our course also. So those who have followed our Unacademy courses can answer it a little bit easily when compared to others, I think so, right? Because I've seen many courses there where they have not dealt that much detailedly, right? Now come to the question there. What will be the answer? Order. The first one will be economical. Second one will be legal. Next one will be ethical. So which option satisfies there? So 1, 3, 4, 2 and your option number D. This is the hierarchical order there. Let's come to the next one. That's an easy question here. Ecology. Those who have learned ecology will be easily answering this question there. Kyoto Protocol operationalizes the UN Framework Convention on which one? Climate change. How many of you answered this? Climate change, right? Now see here. So what this Kyoto Protocol on what basis it operationalizes? By committing industrial countries in transition to limit their greenhouse gas emissions. Limit the industries or developed countries the GHG, greenhouse gas emissions. So greenhouse gas emissions are responsible for climate change. Done? Perfectly done. So let's come to the next one. The Gaia hypothesis, right? When you learn ecology, in the introduction topic itself, we explained this Gaia hypothesis. We discussed about this basic definitions, ecology, ethics, and all those things. How many of you answered this there?
The Gaia hypothesis, which suggests that Earth should be seen as a single organism, was devised by James Lovelock. James Lovelock. Right, now see here. What is this Gaia, right? Can anybody say? So this Gaia is named after a Greek goddess. Right, Gaia, which means earth, or personifies as earth. How many of you got this right? Basic, right? When your first page of this ecology textbook have this data there, you can easily answer this. Come to the next one. Energy used by man does not originate from which one of the following sources? Right? Geothermal energy, which is very, very easy to answer there. Right, easy question. In project management, you will be learning this thing. The term sacred cow is often used to denote a project that those who have extraordinary powers, where these people will not listen anyone. Am I right or wrong? So means automatically they are so powerful. Which option will satisfy, right? You can easily answer this question there. A powerful high-ranking official is advocating. This is your answer there. How many of you got this there? Coming to next one, let us change our topic there. We will go for project management questions, and in regarding project management, standard quality practice, aptitude, the questions were very, very easy and easily scoring questions, right? Observe the question there. Which one of the following is not a condition for preferring top-down time and cost estimates? Bottom up, top down. Now this is not, it seems. For which one? For which one? Yes, top down. Now strategic decision making is preferred condition, cost and time important, high uncertainty. This is not for top down approaches we use for large projects, it is not for small projects. Right? Bottom up we will use for small projects. Okay? Yes. Let's come to the next one. This is easier. Those who are in civil, mechanical, right, your CPM, PERT analysis, everybody can answer this question, right? Easy picking. So that's what, try to pick up easy questions there. In network computation process, which one of the following is for forward pass? We will be learning forward pass technique, backward pass technique to write the values of slack. Am I right or wrong? So let me know the answer there. It starts with the first project activity and traces each path, chain of sequential activities through the network to the last project activity. Yes, it is true. This is the longest path. No, yaar. Which will delay the project? No, yaar. No. It's not right. It starts with the last project. This is backward pass technique. Both options will be showing backward pass technique. So how many of you have done this correctly? Check there. Done. Let's come to the next one. Now consider the following statements regarding production. The major aspects of production that may lead to sickness are major aspects, right? So increase the cost of production. Yes, perfectly right. Increase the cost of production. Decrease in quantity of production. No, yaar. This is not the path. So second option is wrong. Wherever there is second one, eliminate it. And there is no need to check one. Come to the fourth one option. Quality of product not meeting the standards and customer expectation. Yes, perfectly. Producing more quantity than can be sold, leading to accumulation of stock. Yes, perfectly right. Come to the next one. One more easy question in project management, right? Everybody can answer this question there. Now observe the question there. What is the thing given there? Let me know. Which one of the following projects are those which are to be completed within a stipulated time, even at the cost of ending up with higher project cost? And your answer is crash project. Hope so you got my point there. Yes. Next question is a simple basic financial terminology wala question here.
and 99.9% of the questions must have answered this question correctly, right? Which one of the following policies is concerned with changing the supply of money, stock and rate of interest for the purpose of stabilizing the economy at full potential output level? Rate of interest, your repo rate, reverse repo rate, right? Money stock pooling, right? So introduction of money into the market, everything will be done by monetary policy. Monetary policy. Monetary policy. Done. Let's come back to the next one. So all these questions are done by Aman sir there. These are questions regarding standard quality practice, right? He has done all these questions. I'll skip these questions there. We'll directly come to the question which we have to deal. Observe the question there. Again, a general straight environment based, and again GS question, right? The international dispute about modern environmental movement began with the publication of Silent Spring by. So those who prepare very well only can answer this question. Mostly you have left this question, I think so, right? Rachel, one second. Rachel Carson. Okay, done. Chalo, let's go for the next wala questions here. 1 second. Which one of the following is not a principle of series? First of all, how many principles are there? There are 10 principles, ma. There are 10 principles. Now, first of all, what is series? Can anybody give me the full form there? Correlation of, I'll write down here. Correlation for environmentally responsible economies. Environmentally responsible economies. This is the full form, right? What it does there, first of all. So it advocates for ethical and environmentally sustainable business practices, right? So this will advocate ethical and environmentally sustainable business practice. Okay, this is one more correct one. So next one is also easy question here. Of course, those who watch National Geographic channels and news channels can easily answer this question. What the answer there? Can anybody? The largest tidal range in the world is Bay of Fundy, which is in Canada. And you see similar type of tidal range in Ungava Bay, which is also in Canada. Now this tidal range is about 53.5 feet approximately. So plain general wala question. So up to 46 it is material science here. Rajiv Singh sir will take those questions. So this question is easy, right? Mostly you should have answered this, right? The process by which plastic deformation is produced by dislocation motion is termed as slip. Done. So I can deal this, but he is subject matter expert. He will deal those questions there. So 45, 46. Now let me know which one of the following are the well-known routing attacks of IoT. Routing attacks of IoT, right? Clone and Sybil attacks are the well-known routing attacks on IoT. So how many of you have done this? Now let me know the answer there for this. Which of the following layers in, I have discussed the same point in my class and YouTube sessions also. You can watch those sessions. Those who watch can answer it easily, right? Which one of the following layers in OSI reference model is concerned with the transmission of unstructured bit stream over physical medium, deals with mechanical, electrical, functional,
and procedural characteristic to access the physical medium, it seems. The question itself you can easily answer here, and your answer is physical layer. Am I right or wrong? Yes. Coming to the next one, which one of the following systems is used when there are rigid time requirements on the operation of a processor or the flow of data, and thus is often used as a control device in a dedicated application? What is the answer? The real time system. So those who are in CSE, ESE guys can easily answer this type of questions here. If you watch Vishnu sir's signals and systems also, you can answer this question, right? So coming questions are from design and drawing. So Maruti Tiwari sir will come and take those questions. In the meanwhile, I'll deal those questions. I'll go to the question. So which questions I have to deal here? 59. If you have any doubt, you can raise your discrepancies here. Content is the heart of any IT project. You can easily answer this question here. Okay, done. Implementation and maintenance of e-government projects through IT professional hide from the market is likely to result in failure of the project, as the organization is bound to disown such outsiders. Yes, second statement is right. Is there any relationship between first and second statement? No, there is no relationship there. Both are true, but there is no relationship between statement 1 and statement 2 here. So how many of you got this point correctly? Right. So what are the questions that were left over? Aptitude questions were done by Aman sir. So I need not deal those questions again, right? Because so only one faculty is enough, right? If you have any doubts, you can ask me. Mathematics was done by Uma sir. We'll go to the direct one question is there here. 81. How many of you answered this 81 wala? So this is little bit tough question here. Those who have very good acumen in general knowledge, I mean, what I say current affairs, can only answer this question there. Can anybody? Consider the following statements regarding cyber security multi-donor trust fund. The World Bank has launched a new, just they have copy pasted the Google statements and gave you here. On the website itself, these three statements are there. The World Bank has launched a new cybersecurity multi-donor trust fund to better roll out cybersecurity development agenda in a systematic manner. Yes, it is first one true. The new fund has been developed as an associated trust fund under the broader Digital Development Partnership Umbrella Program. Yes, it is also true. World Bank has partnered with 4 countries, namely Estonia, Japan, Germany and Netherlands to launch the product. Yes, it is true. And your option number 1, 2, 3 is true. Coming to this one here. A very good question, right? Consider the following statements regarding hydrogen breakthrough iron making technology, which we are seeing very frequently right now, right? Oh, even Volvo have released their hybrid technology cars right now. So please, anybody did answer this question there? Swedish Green Steel Venture Hybrid, yes, it is true, which had made the world's first customer delivery of steel produced with using steel. This is without using steel. So without using coal, sorry, without using coal. So your first is wrong. So first option, this one is wrong. The steel was made by using hydrogen breakthrough iron making technology, which uses 100% fossil free hydrogen instead of coal and coke. First two statements are completely contrasting. You can easily answer this. The first one is wrong and second one is correct. Is it third one? The venture started delivering the fossil free as at Volvo to trial run. Yes, perfectly true here. Option number 2 and 3 are right. Okay. Coming to the next one. Sorry. Coming to the next one. All questions are GS wala questions only. US based Ohmium International has started India's first green hydrogen electrolyzer manufacturing unit. It's a renewable energy production plant manufacturing unit which was started in Bangalore here. Bangalore is the answer.
Now, which one of the following ministries has repealed means took back unmanned aircraft systems UAS rules 2021 and replaced the same with liberalized drone rules 2021? Your civil aviation ministry have given this. अब देखो according to this, it was launched in 25th August 2021. अब देखो this drone rule, right? What type of drones you have to use according to the places which are noted by the government of India. Nano drones, micro drones, small drones, medium, large drones, right? According to the need and according to the rules given by the government. Coming to the next one, yes, consider the following statements regarding forum for decarbonizing, right? So everything is interrelated to environment only, ma. I have discussed the same point in biodiversity topic. So those who have watched my classes might have answered this. Even Saurabh sir have done this in current affairs capsule. I'll do it. Now consider the following statements for decarbonizing transport. Niti Aayog and World Resources Institute, India jointly launched the Forum for Decarbonizing Transport in India. Yes, it is true. Now, Niti Aayog is implementing, no, it is only advisory think tank, it is not implementing partner. The aim of the project, exact statement is in the website itself, you can easily find out. The aim of the project is to bring down the peak level of GHG transport sector in a line with a below 2-degree pathway, resulting in problems like congestion and air pollution. So your answer is 1 and 3. 3 more questions, sir. We'll do it. Now, which one of the following national parks has become the first national park in India to be equipped with satellite? Same question was asked in previous year ESE examination also here. Kaziranga National Park in Assam. Okay. So, let me only tick down the option there. Which one of the following cities has been named the world's safest city among the 60 global cities in Safe Cities Index 2021 released by Economic Intelligence Unit EU? It is Copenhagen in Denmark. Copenhagen, Denmark. And you know, New Delhi was ranked 48th. Mumbai was ranked 50th. Right? Now, coming to the next one. The first ever G20 ministerial conference on women empowerment was held at. So, it was held at, anybody? Santa Margherita, Liger, Italy, right? Which was our Minister for Women and Child Development, Smriti Irani ji, have, participated in this, attended this, right? Whatsoever. Coming to the next one, which one of the following countries did the Indian Navy participate in the US Navy-led Southeast Asia Cooperation and Training SEACAT military exercise to demonstrate its maritime maneuvers, right? Is it? Which one? Singapore, right? So it's to show the maritime security, right? To feature those, to show the features regarding maritime security, this naval exercise will be done here. And these are the questions regarding GS, ethics, ecology. So I have completed most of the questions there. 3 questions we have an discussion between me and Saurabh Pandey sir. We have a conflict. Of course, we are not getting the correct option there. So we'll come up those three questions tomorrow for sure, and we'll give the final key tomorrow. Thank you and have a nice day. Students, myself Rajeev Singh. I am a Plus Educator on Unacademy platform, and I am a faculty of Mechanical Engineering, and I also deal with this subject called Engineering Materials. So today it was the paper of Engineering Services, and there in that GA paper we had 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions from Engineering Materials. All of those were theoretical only, starting with the first question, that which of the following is not a classification of microscopic diffusion. Mostly the diffusion process is defined as microscopic, yeah, like interdiffusion.
interdiffusion is microscopic. They are asking not microscopic. Why interdiffusion is microscopic? Because you see, interdiffusion means suppose if you take a copper rod, a nickel rod, you heat them and bring them together. So what will happen? Some of the copper atoms will go to the nickel rod and there they will substitute those nickel atoms and there it will stay, the copper atoms. And similarly from nickel rod, few of the nickel atoms will come out and will go to the copper rod and there they will replace some copper atoms and then nickel atoms will stay there. So this is happening like on microscopic level. Similarly, vacancy diffusion. Suppose there is a lattice. In that lattice, vacancy sites are there. So suppose some atom which were at some other position, from there it displaced and went to the vacancy site. It can be there due to the heat addition, it can be due to plastic deformation. You hit the material, you apply some load, so that atom will move and will go to the vacancy site, right. So that is also happening at microscopic level. Similarly, if we talk about lattice diffusion, so in lattice diffusion what happens, like at a time several atoms move from one position to another position. So if we talk about individual atoms, that happens like at microscopic level itself. But if we talk about like surface diffusion, surface atoms moving from one surface to another surface, right. Suppose there are like two liquids and one liquid was poured over other liquid. Upon surface, diffusion will happen undoubtedly. Some of the atoms from that liquid will go to that another liquid atoms will come to this liquid, like you are mixing some alcohol with some water. That's a great example. So that happens at macroscopic level. So out of all these four options, what I feel is surface diffusion is the best option to choose about, which is not microscopic. Fine. So let's move to the next question. That many bulk polymers that are crystallized from a melt are semi-crystalline. Yeah, that's fine. And form which one of the following structures? You see, in this question, the examiner has done this game. We all know that whenever these semi-crystalline polymers, they are crystallized. So what happens in the beginning, nucleation starts, whatever in the chain, the molecules are there, they come and they start to form like spheres. Those nucleation fronts will be like spheres. They will grow, then in between somewhere like some amorphous type of arrangement may be there, then again some spherical regular pattern will grow. That's how it happens during the solidification of polymers. And we all know that this semi-crystalline will form while crystallizing as a spherolite. Here every option is a spherolite only, there is only the spelling change. Spelling change is there, that in place of U in the first option it is O, in place of U in the second option it is E, in place of U in the third option it is I. So I don't know they were checking the spelling mistake or what in this question. So the question's answer will be spherulite. Actually it's spherulite, RU, right. So you have to answer C. Now positive and negative ions by virtue of their net electrical charges attract one another. These attractive bonding forces are, that's what we call as electrostatic force, na. People know electrostatic force like occurs between positive ions and negative ions. They will attract each other, repel each other if they are of same nature. That's electrostatic force. But yes, the examiner has played a small game. Instead of writing the electrostatic force, they have written the Coulombic force. Undoubtedly you need to understand everything from fundamentals. Now this is 9th class question, right. In the 9th standard only we study that Coulombic force is what we call as electrostatic force, and we don't use Coulombic term that much, we use electrostatic term that like more often. So the next, its answer is Coulombic. That's the electrostatic force. That was easy question undoubtedly. Then process by which plastic deformation is produced by dislocation motion. You see this question was purely from mechanical engineering field. By the way, since GS is there for all the branches, you guys from electrical, civil, electronics, you also need to know the basics, right. This is very much basic fundamental. Once you understand the crystal structure, we go and discuss something called as plastic deformation. We all know that plastic deformation happens due to the movement of dislocations,
right? And the dislocations of movement, when it happens within the same grain, within the same colony of atoms, then that's what we call as slip movement, where one atom will break the bond with another bond atom, and then it will form a new bond with the next atom, and that way the things will keep moving. That already I had taught to you, and that's what is the slip. Plastic deformation produced by dislocation motion is nothing but slip. So that was easy question undoubtedly. Then the next question is a stereoisomerism denotes the situation in which atoms are linked together. You see, this stereoisomerism is actually a very good example of spatial isomerism, where the three-dimensional nature may differ, but in that polymer chain things will remain same. Suppose there is a polymer chain, so many molecules are there, carbon is attached with bromine, carbon is attached with fluorine. So, attachments will remain same, the bonding structures will remain same throughout the chain. What will change is their position, three-dimensional arrangement. Like sometimes bromine with carbon and fluorine with carbon will be like this. Then the next part of the chain, their arrangement will be like this. In that next part, their arrangement will be like this. So X, Y, Z, and in between them at any angle, those spatial arrangements will keep changing, and that's what we call as stereoisomerism. So if you see here, the C option in the same order but differ in their spatial arrangement. Yes, in that another type, bondings also change and their arrangement also change. Fine. Some of the complex thermoplastic chains become so stiff that they act as a rigid rods even when heated above the melting point. These materials are, you see guys, in polymers, basically the answer is liquid crystalline polymer. But how does it happen? Why these liquid crystalline polymers, when made as a solid, they act so rigid, and even if you increase the temperature beyond the melting temperature, they still remains rigid? That is out of the discussion of our context. But the best example of such material is, you see, you have LCD screens. Na? In LCD screens, we use these liquid crystalline polymers. One glass, another glass, in between that liquid crystalline polymer will be there in liquid phase. But there are materials available which are actually liquid crystalline polymers, but they have been changed to the solid phase. And one of the best material is Kevlar. You all would have heard the material Kevlar. You see, Kevlar, na, that's a liquid crystalline polymer. When you produce this Kevlar through some specific processes are there, high rotatory moldings will be there in which it will be molded. They become so very hard. This happens because of the arrangements in the pathways of the chain. That's so different actually. There you will get so many fibers like lamellas over one another, and in each of those lamellas the polymer chain will have different spatial arrangement. So that Kevlar material, when you heat it, and even the temperature goes beyond melting point, as I think Kevlar will have melting temperature some 500 degrees centigrade. About that, I am not telling you the exact value, because different types of Kevlars are also present. So my dear, it will burn. When you go beyond the melting temperature, it will burn, it will not melt, it will stay strong, very much rigid. That's the property of Kevlar. That's what they are talking about. And my dear students, the time you stop adding heat in that material, that is liquid crystalline polymer in solid form, it will stop burning. Yes, so that's a great material used a lot there in ballistic missiles and other equipments where a lot of heat is there, and still it has to have very much strength. So guys, these were the only 6 questions which were asked. There were no questions from electrical part and magnetism part. What I believe that the questions should have come. Last year you saw many questions from semiconductor part, but this year there is not a single question. So that's the nature of UPSC, unpredictable service commission. We can't do anything, but yes, there were questions from polymers, there were questions from basic material science, that is slip. So out of 6, I hope you guys, if you have studied material science, you would have at least solved 4 questions, and if you do that, that's great, not an issue. Okay.
So, with this I am closing this session or material science, right, and those who are like mechanical engineers, for them I will be putting another session.